What is up guys, my name is Akash and you're watching yougfx YouTube channel. So this is the first video of our YouTube channel and we are starting with the basics of Adobe Illustrator. तो पहले बात कर लेते हैं कि Adobe Illustrator ही क्यों यूज़ करना है। एडिटिंग तो किसी भी सॉफ्टवेयर से की जा सकती है, Why Adobe Illustrator? सो सिंपल सा आंसर ये है कि Adobe Illustrator वेक्टर फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट्स को बनाता है और अदर कोई भी सॉफ्टवेयर्स रास्टर फॉर्म में बनाती हैं. We will explain this in later part of this video. So this is the first window which you will see after opening Adobe Illustrator. तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू का. यहाँ से हम लोग नए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे उसी के जस्ट नीचे एक ओपन का ऑप्शन है. अगर कोई भी डिज़ाइन पहले से बनाया हुआ है तो उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं. यहाँ पर क्रिएट अ न्यू फाइल बोलकर कुछ प्री डिफाइंड आर्टबोर्ड डायमेंशंस दिए गए हैं. इनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, आगे देखेंगे कैसे. और यहाँ पे है रिसेंट. अगर आप किसी भी रिसेंट डिज़ाइन पे काम कर रहे हो तो वो यहाँ पे दिखाएगा. सो फॉर नाउ वी विल क्लिक ऑन क्रिएट न्यू. आफ्टर क्लिकिंग दैट ऑप्शन दिस विंडो विल अपीयर. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है सेव्ड, मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन. तो इनमें क्या है, जो आर्टबोर्ड जिस पे आप लोग काम करोगे उसका प्री डिफाइंड डायमेंशन लोडेड है. फॉर एग्जांपल अगर मैं वेब में जाता हूँ, then there are many options like common, web large, web minimum. So according to your use you can use any of these dimensions. If you go in print, there are options like letter, A4 size, legal, tabloid, A3, B4 and B5. This all are the dimension of the pages. So for example, if I want to create some page that is not listed here, so we will manually put the value of dimensions to the Illustrator. So here are some options like width, height. So in width आप किसी भी पेज की चौड़ाई को एंटर करोगे. For example, it is in pixels. It can be changed from here, pixels, point, picas, inch and so on. So for now we will keep it in pixels. Now I want the height of 1080p. Now we have entered 1920 cross 1080. Now I have to choose the orientation. If I want it in portrait mode, I will choose this option, and if I want it in landscape mode, I will choose this option. So I want it in landscape mode, so I have chosen this option. Here is an option named as artboard. Here we can choose how many number of artboards we need. So I need only one, so I keep it on 1. Now this is bleed. This is somewhat we'll discuss later. Now here is an option named as color mode. In this we choose the color code of the document. There are two color code, RGB and CMYK. For now keep it on RGB. In other video I will be talking about RGB and CMYK color mode, so don't miss that video. Stay tuned. Now here is an option of raster effect. अगर इसे सिंपल तरीके से समझे तो 300 ppi मीन्स हाई ग्राफिक्स और इसी के साथ फाइल की साइज़ भी उतनी बढ़ेगी. और 36 ppi मीन्स लो फाइल साइज विथ लो रिजोल्यूशन. सो कीप इट ऑन 300 ppi. Now click on create. Now you can see our document has been created of 1920 by 1080. Here it shows the name of the file. तो अभी के लिए ये untitled 3 के नेम से सेव है, तो ये untitled 3 लिखा हुआ है. @36.72%, ये जूम बता रहा है. Now here is written RGB. It means that the document color code is in RGB. Now let us start some of the basic controls of Adobe Illustrator. तो डॉक्यूमेंट पे अगर कहीं भी मूव करना हो तो स्पेस बार प्रेस किया और माउस से क्लिक करके ड्रैग किया. अगर जूम करना हो तो अल्टरनेट प्रेस करके स्क्रॉल इन, स्क्रॉल आउट. Now let us start with some of the basic controls of Illustrator. So if we want to move anywhere on the document, press spacebar, click and drag. This is how you move on Illustrator. And if you want to zoom in and out, simply press alternate key and scroll in for zoom in
and scroll out for zoom out. और Adobe Illustrator मिनिमम 3.13% तक जूम आउट कर सकता है और मैक्सिमम 64,000 तक जूम इन कर सकता है। यू कैन सी ऑल द वैल्यूज हेयर। सो फॉर नाउ विल कीप इट ऑन 100%। अब अगर वापस से इस ऑप्शन की तरफ आए तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो है एक्सपेंड पैनल्स के नेम से। इस पर क्लिक करने से आपके सारे ऑप्शंस एक्सपेंड हो जाएंगे। इनके यूजेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी इनका कोई यूज़ नहीं है। सो फॉर दिस वीडियो विल कीप इट टिल हियर। So these were some basic controls of Illustrator, and from the next video we will be learning about the tools. So till then, subscribe to our channel, stay tuned and like the video.